Hello children, a hearty welcome to Adarsh Vidyalaya Matriculation Online Classes. Class 6, Subject Hindi, Lesson 6, Topic Srimati Indira Gandhi. Children, we have seen about this lesson in the last session itself. We have gone through the chapter fully. I hope you all understood this chapter. This was just we will go through it once again at a glance. It was a chapter about Srimati Indira Gandhi ji. She was the first lady Prime Minister of India. She is one of the most popular ladies in the whole world. She was born on 19th November 1917 at Allahabad. Her father's name was Jawaharlal Nehru and her mother's name was Srimati Kamala Nehru. She was married to Firoz Gandhi ji. So from childhood itself she was very interested in politics. She took part in politics with her father. She took part in all independence revolution with her father. And on 11 January 1966, when Lal Bahadur Shastri, who was the Prime Minister of that time, when he expired, Indira Gandhi took upon as Prime Minister of India. So from 1966 till 1977, she was the Prime Minister of India for a long 11 years. And after that, when we had elections once again in 1977, she lost during the elections. But she did not lose the hope. In 1980, again there were by-elections and again she was chosen as the Prime Minister of India. She was a very noble lady and she loved peace, but she was very courageous at the same time. But on 31st October 1984, she was assassinated by her own black cats who were there to protect her. They itself killed her. Among that, 2 black cats who were there for her protection, they killed Indira Gandhi. But after her death also, we all remember her. She is a person whom we can't forget. She is one of the greatest ladies in the whole world. So this is just a brief about Srimati Indira Gandhi ji. So children, we will move on to the exercise part. So first Roman here given for you is the word meanings. It is Shabdarth, word meanings. Okay children, just go through the word meanings given over here. Already this was given for you in the last session. Now we will move on to the question answers. Second Roman for you is the answer the following questions. Question number 1. श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? Where and when was Indira Gandhi ji born? The first question is, where and when was Indira Gandhi ji born? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? The answer is, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ. श्रीमती इंदिरा गांधी was born on 19th November 1917 at Allahabad. The answer goes as, श्रीमती इंदिरा गांधी जी was born on 19th November 1917 at Allahabad. श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ. सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, श्रीमती इंदिरा गांधी के माता पिता का नाम क्या है? What are the names of mother and father of Indira Gandhi जी? श्रीमती इंदिरा गांधी के माता पिता का नाम क्या है? आंसर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पिता का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू है. So the answer is, Srimati Indira Gandhi's father's name is Jawaharlal Nehru
and her mother's name is Srimati Kamala Nehru. श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पिता मीन्स फादर, पिता का नाम श्री जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू है. We'll move on to the third question, children. श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह किन के साथ हुआ? To whom was श्रीमती इंदिरा गांधी जी married to? श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह किन के साथ हुआ? आंसर, श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ. आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी was married to फिरोज गांधी. आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी जी was married to फिरोज गांधी. श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ. फोर्थ क्वेश्चन चिल्ड्रन. श्रीमती इंदिरा गांधी जी कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर थी? फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम वॉज इंदिरा गांधी जी रूलिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर थी? आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1967 से 1977 तक और 1980 से 31 अक्टूबर 1986 तक प्रधानमंत्री के पद पर थी. श्रीमती इंदिरा गांधी जी वॉज रूलिंग इन इंडिया फ्रॉम 1966 to 1977 and after that for second time she became prime minister for the period of 1980 to 31st October 1984. श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1967 से 1977 तक और 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर थी. फिफ्थ क्वेश्चन चिल्ड्रन. इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने की? इंदिरा जी की किसने हत्या की? हु किल्ड इंदिरा जी? हु किल्ड इंदिरा गांधी जी? दैट इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन. आंसर, इंदिरा जी की हत्या उन्हीं के 2 सुरक्षा कर्मचारियों ने की. इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर ओन 2 protectors, that is her black cats. 2 of her own black cats killed her. So the answer is इंदिरा जी की हत्या उन्हीं के 2 सुरक्षा कर्मचारियों ने की. Now question answers over children, so we'll move on to the fill in the blanks. First one, श्रीमती डैश भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी. Answer is given in red children, you can see here. The answer is इंदिरा गांधी. श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी. सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन. उन्होंने पिता से डैश की शिक्षा प्राप्त की. द आंसर इज राजनीति. उन्होंने पिता से राजनीति की शिक्षा प्राप्त की. थर्ड वन, इंदिरा जी एक डैश व डैश महिला थी. इंदिरा जी एक शांति प्रिय व साहसी महिला थी. फोर्थ वन, इंदिरा जी मरकर भी डैश हो गई. इंदिरा जी मरकर भी अमर हो गई. सो विद दिस द book back exercises of your lesson number 6 gets over children. Write it in your classwork notebooks and learn all the exercises. Thank you children.